And the news coming in now, viewers, ahead of the Delhi election, Communist Party of India General Secretary D. Raja admitted that the Indi bloc stands divided post Lok Sabha election 2024. So, an admission coming in now from the CPI, whose General Secretary D. Raja says that there is a clear divide in the Indi bloc following the results of the Lok Sabha, in which the BJP-led NDA stormed and resurged to power for a third term. Now, after several voices from Indi parties, including the Jammu and Kashmir National Conference, the Trinamool Congress, the Samajwadi Party, NCP, CPI now says that Indi bloc is divided after Lok Sabha poll results. And let's move on to another big story that we are now tracking for you. This one also ahead of the election in the national capital. Let's tell you that UP Chief Minister Yogi Adityanath is likely to be the star campaigner for the Bharatiya Janata Party. Take a look at this report where we bring you how the politics in the national capital is heating up over several issues, from illegal migrants to the insult to the Purvanchalis and more. The battle for Delhi Assembly elections is heating up. All three parties, the BJP, AAP and Congress, are in full campaign mode. The BJP will hold multiple rallies across 11 districts and 33 tehsils of the city. Sources have informed your channel that the BJP has named Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath as the star campaigner for the Delhi elections. As per sources, the UPCM will be leading roadshows and rallies across Delhi. Meanwhile, the political showdown over the Purvanchali voters in the national capital has intensified. The BJP staged a protest outside Arvind Kejriwal's house for allegedly insulting Purvanchalis. The BJP's charge was in response to Kejriwal's claim that the BJP was bringing fake voters from Bihar and Uttar Pradesh to win the elections in Delhi. यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। Railing against the Aam Aadmi Party chief, BJP MP Manoj Tiwari said that Purvanchali voters will show Kejriwal who's fake in February 5th polls. आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के, आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। Meanwhile, after Purvanchali's, politics also erupted over Jat voters, as the Aam Aadmi Party wrote letter to the Prime Minister demanding reservations for the Jats. The BJP said it was a pity that Kejriwal remembered the Jats just when the elections are around the corner. वर्तमान मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि दिल्ली के जाटों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिल्ली में आरक्षण नहीं दिया गया है। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इन 10 सालों में कभी कोई चर्चा भी इस विषय पर दिल्ली विधानसभा में नहीं हुई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जाटों के नाम पर जो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं
उन्होंने कभी दिल्ली में जाटों के हक की आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। As the battle for the Delhi gets bigger, the moot point remains, will the politics over Jats and Purvanchalis work for the parties?